Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Hope your weekends went well. सबकी weekend अच्छी गई. We'll start in 2 minutes, okay? Everyone, make sure that you keep your charts clean. We'll start with the screening. Screening शुरू करते हैं 2 मिनट में. Good morning, Rajiv. Good morning, Anupam. Good morning, Gaurav. किस किस को मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट 2.0 में तकलीफ आ रही है, प्लीज मैसेज कमेंट कर दीजिएगा. हिट द लाइक बटन गाइस. 2 मिनट्स में स्टार्ट करते हैं. 1 मोर मिनट, सॉरी. 2 मिनट्स पहले बोला. किस तरफ का ट्रेड देख रहा है? जब तक इंड्यूसमेंट बिल्ड नहीं करता है, गोल्ड में शॉर्ट में ही है हम. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द स्क्रीनिंग. डेली टाइम फ्रेम पे आ जाइए. व्हाट डू यू नोटिस इन डेली टाइम फ्रेम? जो हमारा फ्राइडे के दिन हमने बोला था कि इस पॉइंट ऑफ एक्शन का लिक्विडिटी लेगा ही लेगा. क्या मार्केट ने लिया? यस, मार्केट डिड टेक द लिक्विडिटी एट दैट पॉइंट ऑफ एक्शन. लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट ने इमीडिएटली एक रिजेक्शन दिखा के बायर पोजीशन स्ट्रॉन्ग क्रिएट की थी. राइट, इस पॉइंट ऑफ एक्शन में जितना हमारा प्रीवियस डिमांड था, उतना प्रीवियस डिमांड को इस पॉइंट ऑफ एक्शन में कंप्लीट की थी मार्केट ने. राइट, सो व्हाट इज द नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन? नेक्स्ट हमें क्या देखना है? किस चीज के ऊपर फोकस करके चलनी होगी हमें? नेक्स्ट चीज जो हमें फोकस करके चलनी होगी इज, क्या सस्टेन होने के बाद कंटिन्यूटी आती है कि नहीं आती है? अगर सस्टेन होने के बाद कंटिन्यूटी आती है, जितना हमारा फर्स्ट डिमांड यहाँ पे जनरेट हुआ था, उतना ही हमारा सेकेंड डिमांड यहाँ पे जनरेट होगा. इफ यू नोटिस, द रिजेक्शन पॉइंट ऑफ द सेकेंड डिमांड इज फ्रॉम द 50%. तो यहाँ पे एक छोटा सा रिवर्सल जो कि हमारा 4 आवर्स में दिखेगी, उसके साथ कंटिन्यूटी टिल आवर नेक्स्ट टारगेट पॉइंट 2802. ओके, सो जिन जिन को ड्राइंग समझ में नहीं आती है, उन लोगों को हॉरिजॉन्टल लाइंस डाल के भी समझा देंगे. नो प्रॉब्लम एट ऑल इन दैट. सो ये हमारा नेक्स्ट टारगेट ऑफ एक्शन होगी जैसे ही इंड्यूसमेंट जनरेट होगा. राइट, सो दिस इज पॉइंट वन दैट यू गाइस हैव टू बी लुकिंग एट. राइट, जैसे ही ये पॉइंट ऑफ एक्शन बिल्ड हुई, व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू बी लुकिंग एट?
the next thing you will be looking at is 4 hours. 4 hours में क्या बोल रहा है मार्केट? मैं गैप अप ओपन हुआ हूं, जितना मेरा प्रीवियस रिट्रेसमेंट पॉइंट था मैथमेटिकल नंबर का, वो रिट्रेसमेंट पॉइंट से मैं अभी एक रिजेक्शन लिया हूं। क्या ये मार्केट इसी पॉइंट ऑफ एक्शन से डायरेक्टली ऊपर चला जाएगा? नहीं, राइट। इस पॉइंट ऑफ एक्शन में मार्केट यहाँ पे एक इंड्यूसमेंट बिल्ड करेगी अगर ऊपर जाना है तो, राइट। इस इंड्यूसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ही मार्केट ऊपर के लिए रीजनरेशन अलोकेशन देखने को मिलेगी। उससे पहले मार्केट विल नॉट ट्राई टू गो डायरेक्टली इन द डायरेक्शन, राइट। एक चीज याद रखना सब लोग, इंड्यूसमेंट बिल्ड होने दो, इंड्यूसमेंट आने दो, विद द इंड्यूसमेंट ओनली आप लोगों को नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन देखना होगा, उसके पहले नहीं। सो दिस इज आवर 4 hours. व्हाट इज 4 hours करेंटली? हमारा वेव क्या हुआ? वेव वाज बेरिश। हमारा टाइड क्या है? हमारा टाइड 2 भी बेरिश है। नाउ हम टाइड 1 में आएंगे जो कि हमारा 1 नंबर है, राइट। इन आर 1 hour सर्कमस्टांसेस हमें यहाँ पे क्या दिखने को मिल रही है? मार्केट गैप अप ओपन हुआ आज के दिन, क्योंकि सैटरडे संडे छुट्टी थी, होने के बाद प्राइस एक्शन के साथ मूवमेंट नीचे के लिए जनरेट हो रहा है, राइट। सो व्हाट इज द वन पर्टिकुलर थिंग दैट यू गाइस हैव टू बी लुकिंग एट? क्या ये इंड्यूसमेंट रेंज यहाँ पे बना के इस मूवमेंट के साथ, जो कि हमारा वेव ऑफ एक्शन जो है, ब्रेक होके रिट्रेस कंटिन्यूटी, या ब्रेक होके रिट्रेसमेंट कैंडल क्रिएट करके कंटिन्यूटी, या वॉल्यूम बढ़ने के बाद एक फेक ब्रेक ऊपर के लिए दिखा के छोटा सा कैंडल इनसाइडर उसके अंदर क्लोज करके नीचे के लिए कंटिन्यू, right? These are the only three possibilities that could create at the current circumstances of Asian markets. Okay, जैसे ही ये plan of action होगी, then we will look into the execution point, right? अभी सब लोग short की तरफ जो बैठे हैं, उनका plan क्या होना चाहिए? Next आते हैं 30 minutes में, that is our right 2.0, right? In our right 2.0 आपको क्या देखने को मिल रहा है? मार्केट ने एक इंड्यूसमेंट बिल्ड करके नीचे के लिए आ रही है, right? Partners, partner 1, partner 2, partner 3. With the partner 3, market has taken a break now in the inducement, right? इस point of action में what is the next thing that you have to look for? ये sustain होने दो, उसके बाद continuity में market आने दो, राइट। इट ऑल वर्क्स, जो जो नया एंट्री लेने चाह रहे हो, अगर ये क्लोज होता है रेड कैंडल, नेक्स्ट कैंडल हल्का सा ऊपर के लिए विक बिल्ड करके कंटिन्यूटी में आती है, यस डेफिनेटली दैट विल बी द प्लान ऑफ एक्शन फॉर अदर पीपल हु आर लुकिंग इनटू इट, जो ट्रेड में नहीं है उन लोगों के लिए। सो दिस इज आवर 30 मिनट्स। सो 30 मिनट्स इज क्लियर दैट ब्रेक होके सस्टेन हुई है। कंटिन्यूटी में आने के लिए कहां पे एग्जीक्यूशन देखते हैं? 15 मिनट्स। व्हाट इज 15 मिनट्स इंडिकेटिंग? 15 minutes is saying that yes, have taken a rejection, post rejection there is a movement, right? One, break, candle close, closure. Now the market is tending to take a directional move in this point of view, राइट। सो एज पर द इंड्यूसमेंट ऑफ 1 hour, क्या जैसे हमने बोला था उस पॉइंट ऑफ एक्शन से अभी करेंटली ब्रेक होके सस्टेन हो रही है? अभी तक नहीं, राइट। कब होगी ये? जैसे ही एक गुड क्लोजर इन द सेंस वॉल्यूम पे आओ, राइट, वॉल्यूम पे एक लाइन ऑफ कंडक्ट ड्रॉ करो, राइट। वॉल्यूम पे आके वॉल्यूम पे आके एक लाइन ऑफ कंडक्ट ड्रॉ करके रखो, ऐसे, राइट। जैसे ही इस अलोकेशन पॉइंट में कहीं पे भी आपको एक कैंडल दिखती है विद द हाई वॉल्यूम, राइट, तब जाके आप ट्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन देख के बने रह सकते हो,
एंड कंटिन्यूटी में यू कैन होल्ड अप द ट्रेड टिल द मैथमेटिकल नंबर, राइट? जहां तक हमारा मैथमेटिकल नंबर बिल्ड होगी, उस मैथमेटिकल नंबर तक हमारा ट्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन होगा, राइट? यहाँ पे गोल्ड की चार्ट है, गोल्ड की चार्ट की फॉर्मूला के स्क्वायर रूट वाला यूज करना, नॉट द स्विंग हाई एंड लो वाला फॉर्मूला। ओके, एनी डाउट्स इन गोल्ड? करेंटली मार्केट इज बेरिश, हमारा ट्रेड ऑफ एक्शन शॉर्ट की तरफ होगा। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट का स्क्वायर रूट वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज करके एवरी इंड्यूसमेंट पॉइंट में आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करके बने रह सकते हो। ओके, एनी डाउट्स इन गोल्ड? If there is no doubts, then we will be moving to BTC. Good morning, Lily Babu sir. How are you? How is your neck pain? All clear, sir, in gold. No doubts, all clear. Yes. Now we will move to BTC. मार्केट ने कल के दिन में एक प्राइस एक्शन बिल्ड की थी। क्यों बिल्ड की थी और कैसे बिल्ड की, राइट? जिनको भी वो डाउट आ रही है, लेट्स स्टार्ट विद डेली टाइम फ्रेम एंड अंडरस्टैंड। बहुत सारे लोगों को ये डाउट था कि लाइक बहुत जल्दी में बोला था, समझ में नहीं आई, प्लीज क्लैरिफाई कर दीजिए एक बार। डेफिनेटली करेंगे, नो डाउट। डेली टाइम फ्रेम पे आइए। इन द डेली टाइम फ्रेम व्हाट डू यू नोटिस? एंड हमारा ट्रेड कहां से चल रही है? हमारा ट्रेड चल रही है 78,000 से, टू बी प्रिसाइसफुल 78,976। ओके, तो इस पॉइंट ऑफ एक्शन में व्हाट इज द वन मेजर थिंग दैट यू हैव टू लुक? मार्केट धड़म करके ऊपर आई, बट व्हाई? ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, मार्केट फ्रॉम फेब दिसंबर में कंसोलिडेशन का हाई पॉइंट ऑफ रेंज जनरेट किया था, उसी पॉइंट ऑफ एक्शन से आज तक मार्केट एक जोन में थी, जो कि फेब मिड वीक तक एक जोन में थी, करेक्ट? इस जोन में आने के बाद व्हाट डिड मार्केट टेंड टू डू? इंड्यूसमेंट रेंज वन बिल्ड किया, राइट? अगर इंड्यूसमेंट में जाओगे, इंड्यूसमेंट का वीडियो में जाओगे, आपको क्लैरिटी मिलेगी, सेम क्लैरिटी यहाँ पे फिर से मैं दिखा रहा हूं, राइट? सो इंड्यूसमेंट वन होने के बाद व्हाट डज द मार्केट डू? मार्केट क्रिएट द सेकेंड इंड्यूसमेंट। क्या आपको यहाँ पे सेकेंड इंड्यूसमेंट बिल्ड होते हुए दिखी? ग्रुप एक्शन में 1 2 3 1 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2, one small break, re-execution, entered. Okay, so same point of view में अभी मार्केट ऊपर जा रही है, करेक्ट? मार्केट ऊपर जाके नीचे आने का संभावना है कि नहीं? डेफिनेटली है। क्यों? अगर हमेशा एक चीज याद रखना बीटीसी में, जब तक शैडो बिल्ड हुई है, जब तक लिक्विडिटी अलोकेशन हुई है, तब तक आप बने रह सकते हो। जैसे ही एक पॉइंट ऑफ एक्शन में यहाँ पे ड्रॉप दिखी, राइट? करेंटली मार्केट हैज ड्रॉप्ड इन टुडेज सिनेरियो 1460। जिस दिन आपको यहाँ पे 2000 पॉइंट्स प्लस दिखेगा ड्रॉप में, समझ लो दैट विल कम डाउन टू टेक द मिनिमल लिक्विडिटी ऑफ द बायर्स, राइट? मिनिमल लिक्विडिटी ऑफ द बायर्स इन द सेंस, जितना आपका लिक्विडिटी स्वीप कैंडल क्रिएट होती है, उतना मूवमेंट ऑफ अलोकेशन 70% रेंज से डिस्काउंटेड प्राइस में लोग फिर से ऐड करना चाहते हैं, राइट? इन द सिनेरियो क्या जानना चाहिए? 70% ऑफ द रेंज डिस्काउंटेड प्रीमियम्स कहां पे मिलेंगे?
उनको वो प्रीमियम मिलेगा ब्रेकर पॉइंट पे. वेयर इज द ब्रेकर पॉइंट? द ब्रेकर पॉइंट इज ऑन टॉप ऑफ दिस रेड बॉडी ऑफ द विक कैंडल, राइट? सो इस पॉइंट ऑफ एक्शन तक एक मूवमेंट दिखने को मिलेगी आप लोगों को. पोस्ट दैट मूवमेंट यू विल बी हैविंग अ सर्कुलम इंड्यूसमेंट बिल्ड. उस इंड्यूसमेंट के साथ फिर से मार्केट कंटिन्यूटी में ऊपर के लिए जाएगी. Okay, so this is our daily time frame. Now we will come down to 4 hours. 4 hours में what do you notice? Saturday, sorry, Friday का ट्रेड अभी तक चल रही है, no doubt. What did the market do? Market took one rejection कल के दिन, right? अगर ये 15 मिनट्स या 30 मिनट्स में देखेंगे, ये पूरा एक कंसोलिडेशन जोन था. उस पॉइंट ऑफ एक्शन में what do you have to notice? हर एक पॉइंट ऑफ व्यू में सबको बिठाया था, राइट? एंड यहाँ पे अगर नोटिस कर रहे हो, संडे के दिन सबको बिठा के यहाँ पे एक रिजेक्शन दिख रही है जो कि विक रेंज है, करेक्ट? वो विक रेंज क्यों कंडक्ट हुई एंड उस पॉइंट ऑफ एक्शन से मूवमेंट क्यों आ रही है? सो करेंटली हमारा जो फ्राइडे का दिन का जो मूवमेंट था बुलिश था. आज के दिन में हमारा डेली टाइम फ्रेम बुलिश है, राइट? 4 hour टाइम फ्रेम भी बुलिश ही है. नाउ वी विल कम डाउन टू आवर टाइड टू व्हिच इज 1 hour. इन द सिनेरियो अगर नोटिस कर रहे हो, क्या इंड्यूसमेंट बिल्ड हुई थी इस पॉइंट ऑफ रेंज पे? एक सेकेंड जूम कर देता हूं. ओके, सो इस पॉइंट ऑफ एक्शन में कल के दिन क्या हुआ था? इंड्यूसमेंट 1 2 1 2 ग्रुप 1 2 1 2 कंटिन्यूटी 3 कैंडल्स 1 2 1 2, राइट? इंड्यूसमेंट में कितने तरीके के मूवमेंट्स अलॉकेट होते हैं? फर्स्ट वन, इंड्यूसमेंट बिल्ड होगा, ब्रेक होगा, सस्टेन होगी, कंटिन्यूटी. इंड्यूसमेंट बिल्ड होगा, ब्रेक होगा, रिजेक्शन लेके कंटिन्यूटी. एंड थर्ड वन क्या है? जो कि इंड्यूसमेंट बिल्ड करेगी, इंड्यूसमेंट बिल्ड करने के बाद क्लोजर देगा, क्लोजर देने के बाद एक कैंडल अंदर, एंड देन फेक मूवमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए बिल्ड होने को दिखने को मिलेगी. सो इन दिस सिनेरियो क्या दिखने को मिल रहा है आपको? मार्केट ब्रेक किया, सस्टेन किया, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट, करेक्ट? सो ऑलवेज रिमेंबर, जब तक मार्केट एक टेंटेटिव मूवमेंट ऑफ अलोकेशन नहीं बिल्ड करती है, आप ट्रेड में एग्जीक्यूट बने ही नहीं रह सकते हो. ये तो 1 hour है. जाते जाते आपको समझ में आएगी ये जो रेड कैंडल आने के बाद इनसाइडर बिल्ड करके कैसे मूवमेंट अलोकेट किए लॉन्ग के तरफ, राइट? सो ये हमारा 1 hour का मूवमेंट ऑफ अलोकेशन जो करंट सिनेरियो में था वो बुलिश के लिए कन्वर्ट होने के बाद आज के दिन में मार्केट क्या कर रहा है वो देखते हैं. व्हाट डू यू हैव टू नोटिस, राइट? पॉइंट हाई लिया, जितना हमारा एग्जीक्यूशन पॉइंट है, फॉर्मूला जितने लोग भी यूज किए हो लगाओ. दिस इज योर हाई पॉइंट 1, स्विंग हाई स्विंग लो, राइट? स्विंग हाई है, ये स्विंग लो है. सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा रिट्रेसमेंट पॉइंट आके 83,587.93 है. ओके, जो ये सब्ट्रैक्ट करोगे वैल्यू, वो वैल्यू को हम यहाँ पे करेंगे क्या? 83,957.93 प्लस ब्रैकेट ओपन, जो हमारा फॉर्मुलेटिव नंबर मिलेगा, द सब्ट्रैक्शन ऑफ दिस कैंडल will be over here and we will do it to 2. What is the target? आप कैलकुलेट करके कमेंट में बता दीजिए, राइट? सो फॉर अ सिंपल एग्जांपल मैं ही कर देता हूँ. एट द करेंट सिनेरियो 1 hour का टारगेट यहाँ से क्यों रिजेक्शन ले रहा है मार्केट, राइट? सो हमारा पॉइंट 1 हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रॉ करते हैं विच इज एट 85,177.61, राइट? उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे टू द लो पॉइंट which is at 78,258
0.52, राइट। अब इस पॉइंट ऑफ एक्शन में हमारा फॉर्मुलेटिव नंबर आके क्या हुआ, हमारा फॉर्मुलेटिव नंबर आके विच इज 6919.09, ये हमारा फॉर्मुलेटिव नंबर हो गई आज का दिन का। इसको हम यहाँ पे रखते हैं, दिस इज आवर फॉर्मुलेटिव नंबर। नाउ हाउ डू वी कैलकुलेट दिस? सेम वे, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट ऑफ एक्शन, ये हमारा हाई था, उसका रिट्रेसमेंट पॉइंट कहाँ पे है? उसका रिट्रेसमेंट पॉइंट 83,871, 80, राइट। सो जैसे ही फॉर्मुलेटिव अलोकेशन करोगे, हमारा प्लान ऑफ एक्शन इधर दिखने को मिलेगी, राइट। एट द करंट सर्कमस्टांसेस, हमने इस पॉइंट ऑफ एक्शन से दो फॉर्मूला अलोकेट किए थे। फर्स्ट हमने हाई एंड लो को सब्ट्रैक्ट किया था, जो कि सब्ट्रैक्टिव वैल्यू आके 85,177.61 माइनस 78,258.52, उसका वैल्यू निकल के आई थी हमारे को 6919.09, राइट। जैसे ही ये वैल्यू निकल के आई, व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू बी डूइंग? द नेक्स्ट थिंग यू हैव टू बी डूइंग इज subtracting to the movement of allocation at the current stage। अगर नोटिस करोगे, क्या दिख रहा है? ये हमारा स्विंग हाई एंड स्विंग लो थी, मार्क कर लिया। उस पॉइंट ऑफ एक्शन में हमारा फर्स्ट रिट्रेसमेंट पॉइंट, ये हमारा फर्स्ट रिट्रेसमेंट पॉइंट है, ये हमारा फर्स्ट रिट्रेसमेंट, क्या हो गया, ये हमारा फर्स्ट रिट्रेसमेंट पॉइंट है। इस रिट्रेसमेंट पॉइंट के पास what is the number that we are having? The number we are having is 8। ये हमारा रिट्रेसमेंट वैल्यू है, राइट। ये रिट्रेसमेंट वैल्यू आने के बाद व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू मल्टीप्लाई। हाउ डू यू हैव टू मल्टीप्लाई? यू विल फर्स्ट ऐड, किस तरफ का डायरेक्शन होगा उस तरफ का डायरेक्शन, विद द डायरेक्शन ओपन ए ब्रैकेट, हमारा वैल्यू कितना है एट द करंट स्टेज? हमारा वैल्यू आके फॉर्मुलेटिव वैल्यू इज 6919.09,
right? With that, what you have to do, into first intermediate number निकाल लीजिए, which is 2, 1.809 first range है, second range आके 1.809, second range आके 2. So we will take the major level of 2, right? जैसे ही हमने 2 का allocation यहाँ पे देखा, what do you notice? We got a number of 97,710.05. So this is our first accumulative target, right? Then what you have to do, okay, मेरा major target तो यहाँ पे मिल चुकी है. What is the next thing that you will be following through? The next thing you will be following through the same formula, right? यही formula को what we will look for? We will look for a movement with 1.618. ओके, 1.618. सो ये हमारा दो मेजर रेशियो हो गया. सो 1.618 से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपका टारगेट आके 95066.95 आएगी. दैट इज योर फर्स्ट टारगेट दैट यू विल बी लुकिंग फॉर. क्या हमारा फर्स्ट टारगेट हिट हुआ? हिट हुआ कि नहीं हुआ? That is the only thing that you guys have to follow, right? This is the first major secret of calculating the directions in one way. Okay. So anyone has any doubts in the calculation perspective till now? अगर है तो बता दीजिए, नहीं तो we will move forward. थोड़ी देर के लिए ट्रेड सब भूल जाइए, that's totally fine. Let's focus on the learning perspective. Then trade मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है? Do you guys have any doubts over here? किसी को भी डाउट है, प्लीज डू आस्क. गोल्ड में वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू फॉलो एमसी वर्ड 2 सर. गोल्ड में हमेशा एमसी 1 फॉलो कीजिए विद द स्क्वायर रूट. ओके. बीटीसी में किसी को डाउट है? No doubts, it worked perfectly and taking rejection from the same point. Okay. तो ए पॉइंट ऑफ व्यू आने के बाद व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? सर मेजरिंग रिट्रेसमेंट इज स्टिल फर्दर डाउन. नो सर, वो टारगेट हिट हो गया ना. सो इफ यू आर लुकिंग इन पर्सपेक्टिव, ये हमारा मेजर है, राइट? सो द सेम सिनेरियो, लेट्स डू इट इन अ डिफरेंट पर्टिकुलर मैनर, ठीक है? सो इन दिस, what is the first thing that you guys will be doing? The first thing that you guys will be working on, first retracement point, right? So let's take this as a swing high and swing low, right? Low remains the same, just the high will change, right? So let mark out that levels. So what are the numbers? 80,000, 80,729.91 minus 78,258.52. Okay. So let's take this number now. 780, 729.91 minus 78, 258.52. What is the number that you guys are getting? 2471.
1.39, राइट? इतना ही चेंजेस आपको करनी होगी। जैसे ही आप ये चेंजेस अलोकेट करोगे, व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग दैट यू गाइस विल फाइंड? 79,544.71 प्लस ब्रैकेट ओपन 247.1.39 into 1.618. जब वैल्यू आइडेंटिफाई करोगे, what is the first target that you guys are getting? The first target you guys are getting is 83। क्या हमारा ये टारगेट हिट हुआ यहाँ पे 83,543 पे? सॉरी, जैसे ही टारगेट हिट हुई, आपका ये तो गोल्डन रेशियो है, ये गोल्डन रेशियो है। गोल्डन रेशियो होने के बाद व्हाट इज द नेक्स्ट मेजर? हेलो, हेलो, राइट? ये तो हमारा गोल्डन रेशियो है। गोल्डन रेशियो होने के बाद इंटरमीडिएट रेशियो भी आएगा, करेक्ट? इंटरमीडिएट रेशियो पे व्हाट इज द वन थिंग दैट यू गाइस हैव टू बी फॉलोइंग? The one thing you guys have to be following is same formula with the allocation of 2. जब 2 allocate करोगे, what do you guys get? Instead of 1.618 के बदले में अगर 2 को allocate करोगे, आपको क्या नोटिस आएगा? आपका टारगेट आएगा 84,787। 84,487 का टारगेट हिट हुआ? Yes, hit हुआ, right? So that's how you have to wait and follow. Okay, Mahavich, जैसे ही ये टारगेट हिट होता है, what did you notice? Inducement build हुआ था इस point of action में। Was the inducement built? One, partner one, partner two, partner three, partner four, right? Partner four आपका allocation point यहाँ पे दिखने को मिल गई। जैसे ही आपका पॉइंट अलोकेट हुआ था इस पॉइंट ऑफ एक्शन में, मार्केट क्या किया? मार्केट ने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद रिट्रेसमेंट कंटिन्यूटी, राइट? रिट्रेसमेंट कंटिन्यूटी होने के बाद द फॉर्मुलेटिव नंबर एंड द मेजरमेंट एंगल विल चेंज, राइट? तो उस एंगल को चेंज करने के लिए द पर्सपेक्टिव शुड बी चेंज्ड, राइट? टारगेट हिट, market needs to continue the movement, definitely 4 आवर्स में अलोकेट कर लो। अगर 4 आवर्स अलोकेशन नहीं मिल रही है, 1 आवर में आके इंड्यूसमेंट खत्म होने के बाद जो मूवमेंट आएगा, उस मूवमेंट ऑफ एक्शन को अलोकेट करके नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन का टारगेट अलोकेट करके चल सकते हो। ओके, दिस इज द ओनली सिंपलेस्ट वे टू आइडेंटिफाई द टारगेट्स जो आज तक आप लोगों को किसी ने नहीं बताया था। So this is the simplest way to be in a trade. Okay, guys, doubt clear? सबको डाउट क्लियर हो गया है तो प्लीज कमेंट कर दीजिए, so we can move out to our screening perspectives. So we can move, right? So let's move. So जैसे ही ये अलोकेट हुई, आज के दिन में मार्केट क्या कर रहा है? आज के दिन में मार्केट टारगेट हिट होने के बाद एक इंड्यूसमेंट फॉर्म करके उस इंड्यूसमेंट फॉर्म के साथ ब्रेक करके सस्टेन होके नीचे आ रही है। टू पर्सपेक्टिव्स,
What are the two perspectives? Let's look in the 30 minutes time frame. सब हटा दूंगा तो कंफ्यूजन आप लोगों को हो जाएगी. So give me a moment. And this work in every markets. Yes, it works in every market. Just make sure Indian market में ट्रेड करने वाले 3 regiments allocate करना. 3 regiments allocate करने के बाद from that plan of action sideways market में execute मत करो, directional markets में ही allocate करो so that you guys can identify and be in the right direction. Okay, so this is our 30 minutes. What do you guys notice in 30 minutes? 30 minutes में plan of action execute हुआ था. उस execution के बाद what is market trying to do at the current state? Right? Market is trying to work on the probabilities of the liquidity. Right? Inducement 1. फिर से टारगेट जब भी हिट होता है, inducement 1, group inducement 1, inducement partner 1. Post that, what did the market do? Break, rejection, continuity. Okay. So in this scenario, अभी आके market फिर से एक inducement, छोटा सा inducement build कर रहा है. So क्या this could be a reversal zone again? To identify and be in the right direction आपको क्या करना पड़ेगा? Level out को draw कर लीजिए, right? Because post one inducement we are getting a second inducement build. अगर market continue करना है इस point of action में आके एक छोटा सा रिजेक्शन लेके मार्केट विल टेंड टू फॉल. कहां तक फॉल आएगी? सेम फॉर्मूला अप्लाई करो. जैसे ही ब्रेक होता है मार्केट, this is your high point, this is your low point, subtract it, you will get a formulative number. Once the formulative number you have got, you will have to multiply it with the golden ratio first. Once you get a golden ratio, next you will have to do it with intermediate ratio. Intermediate ratio allocate होने के बाद just wait. Post waiting, what you have to do? Okay, inducement range है, ये मेरा डिमांड है. जितना मेरा डिमांड, क्या मेरा इंड्यूसमेंट रेंज जितना बड़ा रिट्रेसमेंट मिला है? अगर मिला है, उसी पॉइंट ऑफ एक्शन को यहाँ पे अलोकेट करो. यस, द रिजेक्शन इज टेकिंग फ्रॉम सेम पॉइंट ऑफ एक्शन. अगर कंटिन्यूटी में आएगा तो मार्केट कहां तक आएगी? मार्केट फर्स्ट टारगेट विल बी ऑफ 90,861. अगर ब्रेक होके सस्टेन होती है, इसका ही डबल पोर्शन पे आपको वैल्यू अलोकेशन देखने को मिलेगी विच इज एट 88,562 and 50% of the second demand will be your mini reversal area. Okay, दिस इज पोस्ट सस्टेनिंग. ये जो फॉर्मेट है ये पोस्ट सस्टेनिंग फॉर्मेट होगी, राइट? अगर ये कंटिन्यूटी करेगा तो कितना कंटिन्यूटी करेगा? जितना हमारा प्रीवियस सप्लाई है, राइट? ये सप्लाई का जो प्रीवियस डिमांड यहाँ पे दिख रहा है आपको, उतना मूवमेंट अलोकेट करो. राइट? At this scenario, this is our previous demand area. What we can notice, this will be your first allocating point. अगर ये break होके sustain होता है, well and good. Else the market will tend to create a small inducement range and follow through in the perspective of the same direction. अगर यहाँ पे follow through आएगा तो कितना आएगा? जितना हमारा ये मूवमेंट अलोकेट हुई है उतना ही मूवमेंट अलोकेशन यहाँ पे दिखने को मिलेगी फिर से कंटिन्यूटी. ठीक है? So this is the price action that you guys have to follow and be in the trades. So this is gold. Wait for the, sorry, this is BTC. Wait for the right movement. Currently market Asian session में हल्का सा consolidation range में है. Sorry, POI range में है. POI range से निकलती है. Then our next movement of allocation will be towards the trade, not prior to that. ठीक है? Coming down, let's move to Indian sessions. जितने भी लोग इंडिया एनएससी पीएससी में ट्रेड करते हैं उन लोगों के लिए वो
How often do you trade in Indian sessions? Very regularly, sir. No doubt in that at all. Okay, same Indian sessions follow the same rule. Allocation point of view, looking into it, everything is same. एक ही चीज चेंज होगी, यहाँ पे पीओए रेंज ब्रेक होने के बाद ही ट्रेड्स एग्जीक्यूट करना है क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम डीकेस होता है. ओके, सो यहाँ पे दो चीजों का सेम फैक्टर के साथ आपको याद में रखना होगा. क्या है वो दो चीज? एक आके थीटा डीके, एक आके चेंज इन गामा. गामा चेंज होना बहुत जरूरी है. एक्शन पॉइंट सेम है, राइट? प्रीमियम डीके हो या ना हो वो फर्क नहीं पड़ता है. गामा चेंज होना है. प्रीमियम डीके उसी पॉइंट ऑफ रेंज में होगा जहां पे टाइम कम है, राइट? एंड उस पॉइंट ऑफ एक्शन में हमेशा उस कंसोलिडेशन जोन से एक ब्रेक, एक रिजेक्शन पॉइंट का वेट कीजिए. उसी पॉइंट ऑफ एक्शन में ट्रेड अलोकेट करके चलना, राइट? सिंपल है. सो इस पॉइंट ऑफ एक्शन में मार्केट व्हाट इज इट ट्राइंग टू डू? गैप अप ओपन हुआ. गैप अप ओपन होने के बाद डिड यू गेट अ रिट्रेसमेंट पॉइंट ओवर हियर? यस, डेफिनेटली. लेट्स allocate the same formula at this range. So हमारा range वन क्या है? Let's take our range one as this. Let's take our range two as this. Range three as this. Okay. So इस point of action में what do you have to do? Write down the numbers. Same formula, no change at all. 22 261.60 minus 22 153. जो वैल्यू निकल के आएगी, that value number is कैलकुलेट कर लो. 22261.22261.60 minus 22153.95. सो हमारा वैल्यू क्या है? 107.65. This is our value, right? Next, what is the thing that you guys have to follow? हमारा next point of action होना चाहिए जितना हमारा रिट्रेसमेंट पॉइंट है. इस पॉइंट ऑफ एक्शन में व्हाट इज आवर रिट्रेसमेंट पॉइंट? आवर रिट्रेसमेंट पॉइंट इज 22,189. 22,189.60. या मार्केट बेरिश है, बुलिश है? बेरिश है. सब्ट्रैक्ट bracket open, subtract bracket open, what is the formulative number? 107.65, right? Into first target क्या है? Always 1.618, bracket close. 1.618 क्या है? Golden ratio. Calculate the number. 22189.60 minus bracket open 107.65 into 1.618. What is the target that you guys are getting? 22,115. मार्केट कहाँ पे एग्जैक्टली रिजेक्शन ले रहा है इस जनाब? 22,015.42. This is our target. 22
Correct. Okay. Do you guys see where exactly the rejections is taking? इतना भी मुश्किल नहीं है यार ट्रेडिंग. Just right direction with the right numbers with the right math. Who said trading was difficult? Yes, trading is difficult if you guys are gambling in the market, if you guys are not following the rules, if you guys are just losing the money haywire, not following the risk management, not sitting patience fully, right? Not executing the trades emotionally, right? There should be no emotions in the market. लाइव ट्रेड है, क्लोज्ड हुआ हुआ चार्ट भी नहीं है ना, मार्केट यहाँ पे बंद है, चल रही है ना मार्केट. हमेशा बुलिश मार्केट्स में ऐड करना, बेरिश मार्केट्स में सब्ट्रैक्ट करना, पेशेंसफुली इंड्यूसमेंट पॉइंट ऑफ रेंज को वेट करना, विद दैट इंड्यूसमेंट पॉइंट ऑफ रेंज ब्रेक, execute the trade. Right? In this scenario, there is no point of interest to build. Hence, we are not explaining that. अगर point of interest build होती है, definitely we will explain you. Okay? डायरेक्ट एंट्री यहाँ पे लॉन्ग की तरफ नहीं देखना, वेट करो. पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट दिखाने तो दो. अगर ब्रेक होके कंटिन्यूटी आती है, नेक्स्ट इंटरमीडिएट रेशियोज डालो. व्हाट इज द इंटरमीडिएट रेशियो? व्हिच इज 1.809 2. वो भी ब्रेक होता है, देन रेजिमेंट रेशियो 3. सिंपल. एनीवन हैज एनी डाउट्स? अभी करंट सिनेरियो में मार्केट टारगेट पे आके रिजेक्शन ले रही है. अगर कंटिन्यूटी आना है, मार्केट को इंडिकेट करने दो, रिटेलर्स को बिठाने दो, उसके साथ ही नेक्स्ट मूवमेंट ऑफ एक्शन दिखने को मिलेगी, उससे पहले नहीं. ओके. सो इन दिस सिनेरियो व्हाट इज वन थिंग दैट यू गाइस हैव टू डू? सिट पेशेंसफुली, हिट द लाइक बटन, right? If you're new to the channel, if you're liking the content, if you're getting educated, do share and subscribe. In the scenario, अभी अगर मार्केट रिवर्स होती है, राइट, फॉर्मूला स्टिल गेट्स अप्लाइड द सेम. कंटिन्यूटी में रिवर्स होती है, अभी जो हमारा पॉइंट ऑफ एक्शन है उतना ही पॉइंट ऑफ एक्शन का फॉर्मूला लगा के देख लो, मार्केट मूवमेंट आपको देगी. ओनली थिंग, डोंट ट्रेड इन फोमो एंड इन पीओआई रेंज. ये दो चीज कंट्रोल में लाओ, एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड एंड प्लेस्ड. ओके. This is the only thing that you need in the market, nothing else, right? एक चीज ऑब्जर्व करना, लोग बोलते हैं आईटीसी, लोग बोलते हैं आईसीटी, लोग बोलते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, लोग बोलते हैं, कोई भी कुछ भी बोलने दो यार, हर एक चीज मार्केट एक ही चीज के साथ फॉलो होती है, राइट? किस चीज को लेके फॉलो होती है मार्केट, हमेशा याद रखना, मार्केट एक पैटर्न फॉलो होती है, राइट? आईटीसी फॉलो कर रहे हो, आईसीटी फॉलो कर रहे हो, गुड फॉर यू. सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फॉलो कर रहे हो, गुड फॉर यू. मूविंग एवरेज फॉलो कर रहे हो, गुड फॉर यू, राइट? ब्रेकआउट ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर रहे हो या ब्रेक डाउन ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर रहे हो, गुड फॉर यू, राइट? देयर इज नो एज सच थिंग called as what it is. ITC, a person who trades in a fair value gap, ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में ट्रेड करता है वो वाला, everything just has the names. Okay, it's just the names. जो इतना दिन से आप लोग फॉलो कर रहे हो ना, फेयर वैल्यू गैप, राइट?
सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्यों बिल्ड हो रहा है करके कोई बताया? दो पॉइंट ऑफ एक्शन को ऐड कर दिया तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गया, ब्रेक हो गया तो कंटिन्यूटी, राइट? मूविंग एवरेज, हर एक चीज में तो एक ही चीज है, व्हाट इज दैट? अ मैथ रनिंग बिहाइंड इट, राइट? ऑलवेज रिमेंबर। गुड मॉर्निंग नवीन सर, ऑर्डर ब्लॉक एक्सप्लेन करेंगे। जो जरूरत चीज जो जरूरी है मार्केट में सिर्फ वही सिखाया जाएगा, जो जरूरी नहीं है वो हम सिखाते ही नहीं। ओके? अगर आपको ऑर्डर ब्लॉक चाहिए तो ऑर्डर ब्लॉक हम देंगे, बट यू विल गेट ए वीडियो, आई विल नॉट एक्सप्लेन बिकॉज वी डोंट यूज इट। ओके? What is the order block? Basically, order block is one point of action where the market will take a support or a resistance, right? So order block क्यों बोल रहे हो? Support and resistance range बोल दो यार, हो गया। Fancy names doesn't make trading fancy, okay? यहाँ पे दो ही चीज चाहिए आपको, कड़वी है बट सच्चाई है। पेशेंसफुली ट्रेड कर सकते हो, हर एक जगह पे घुसने की ना मीन्स हर एक जगह पे घुसने की ट्राई कर रहे हो, मार्केट आपके लिए नहीं है। अगर पेशेंसफुली बेच सकते हो, रूल्स फॉलो कर सकते हो, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर सकते हो, फॉर्मूला क्या है वो मैं दे चुका हूं, अप्लाई इट, एग्जीक्यूट इट, who will stop you? Let me see, because this is the only thing market follows, nothing else. Okay? एंड किसी का कमेंट आया था, कंटेंट तो अच्छा है, स्क्रीनशॉट आया टीम ने भेजी है, राइट? कंटेंट तो अच्छा है, बहुत जल्द कोर्स आएगा, उसके बाद पता चलेगा कि कितना पानी में। उसके लिए भी मैं जवाब अभी ही देता हूँ, राइट? कोर्स नहीं आने वाला है जनाब, राइट? सीखना है तो लाइव पे आके सीखिए, एग्जीक्यूट कीजिए, बने रहिए। ओके, एज सिंपल एज दैट। गुड मॉर्निंग वेंकट। ओके, एनी डाउट्स गाइस? सर ऑर्डर ब्लॉक बेस्ट फॉर स्मॉल स्टॉप लॉस, किसने बोला? कितना कैपिटल से यूज करते हो, कभी आपने मैथ के थ्रू आपने आइडेंटिफाई किया है कैसे होगा करके? नहीं ना। किसी ने आपको बोला? किसी ने आपको बोला, आप वो फॉलो कर रहे हो, राइट? हमेशा याद रखिए, इंडियन सेशंस में ट्रेड कर रहे हो, 5 to 10% कैलकुलेट करो, उस हिसाब से बने रहो, राइट? उसके साथ वॉट एवर द रेशियो फॉर्मेलिटिकल नंबर्स आते हैं, दैट दैट्स इट। व्हाट इज स्टेटमेंट फॉर आईसीटी एंड एसएमसी ट्रेडर्स? So what concept we need to learn? Ricky, good morning. You don't have to learn any concepts. You just have to learn to sit patiently, identify the swing high and swing low, retracement point, inducement creation. Right? उतना ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए. Right? 22 days, practice this. You guys will see the result for yourself with your own eyes. Nothing else. Right? सप्लाई एंड डिमांड ड्रॉ करना सीख लीजिए मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स के थ्रू, यूर डन एंड डस्टेड। प्रूफ चाहिए, राइट? लास्ट वीक पूरा हर एक स्ट्रीम में देखो, वी हैव क्लोज मोर देन 100 पिप्स कंटिन्यूअसली फॉर 5 वर्किंग डेज, राइट? And proof, the traders who have seen, who are texting, they are the proofs. If you want more proof than that, sorry man, right? मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट फॉलो कीजिए,
उसके साथ इंड्यूसमेंट आइडेंटिफिकेशन देखिए, दैट्स इट। उसके बाद क्या करना है, टारगेट अलोकेट हुआ है, नंबर पता है आपको, कौन सा तरफ का डिमांड डायरेक्शन है। अगर बेरिश मूवमेंट है, डिमांड डबल अलोकेट कीजिए, बुलिश मूवमेंट है, सप्लाई डबल अलोकेट कीजिए, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स नीडेड। ओके सर, ए शॉर्ट इज बिल्डिंग इन गोल्ड, नॉट श्योर। नहीं, शॉर्ट का ट्रेड है, अभी भी चल रही है, राइट? So Majiv, what is the one thing that you have to work over here? So Majiv, you have to just focus on one thing, right? Inducement build हुआ था, break हुआ है, right? Break होने के बाद sustainability किस तरफ के आता है, right? उस हिसाब से you just have to look and sustain in the movement, okay? सो अगर मार्केट ऊपर के लिए ब्रेक हुआ है, राइट? सो अगर ऊपर के लिए ब्रेक हुआ है तो फेक मोमेंट दे के नीचे आ जाएगा। करेंट सिनेरियो, लेट मी रिमूव द एग्जीक्यूशन पॉइंट्स ओवर हियर जो हमने लिया है शॉर्ट के लिए, राइट? सो इन दिस सिनेरियो व्हाट इज द वन मेजर थिंग दैट इंड्यूसमेंट ब्रेक हुआ, सॉरी, इंड्यूसमेंट रेंज ब्रेक हुआ इस पॉइंट ऑफ एक्शन में, राइट? व्हाट डू यू नोटिस, जितना गैप आज क्रिएट हुई थी, कवर किया, मार्केट एज सस्टेन्ड अलोकेटेड, राइट? एट दिस पॉइंट ऑफ रेंज मार्केट ऊपर के लिए मूव ही है। यहाँ पे व्हाट आर पीपल फॉलोइंग, ओके, हायर हाई स्ट्रक्चर्स बना के चल रही है, राइट? उसके साथ बने रहेंगे, मजा आएगा डेफिनेटली। यहाँ पे एक छोटा सा इंड्यूसमेंट क्रिएट करेगा, फिर से सबको ट्रैप करके उड़ा देगा, ओके? सो जस्ट मेक श्योर यू वेट एट द राइट पॉइंट। एशियन सेशन में आपको ट्रेड नहीं करना है तो चलेगा, एक अलोकेशन पॉइंट देने दो, हरी मत होना, हरी करोगे तो आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे, ओके? जस्ट वेट पेशेंसफुली, एक डायरेक्शन अलोकेट होगी, जो सुबह से बैठे हैं उन लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, जो अभी अभी ट्रेड देख रहे हैं उन लोगों के लिए एक राइट पॉइंट ऑफ अलोकेशन दिखने दो, उसके बाद ही, ओके? सल्यूट, व्हाट कॉन्सेप्ट लर्न हो गया, नॉट श्योर। Request sir to please ignore ICT and SMC traders. No, we will not ignore them, right? So because they are following something from so many years, months and all, so let them also learn. Sir, today trade running, yes, one trade running which is from 2870. Okay, ठीक है sir. Even subscribers are increased. फिदा हो गया मैं. Thank you. Sir, I'm new here. Do you have any video explaining the concept? What you just अंकित, वीडियो आएगी, बट अभी के लिए फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग लाइव मार्केट ने दो जगह पे एग्जीक्यूशन दिखाया था। एक एग्जीक्यूशन आके इंडियन सेशंस, एक एग्जीक्यूशन आके बीटीसी में, उसे फिर से देख लेना, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है? what are mathematical concepts? Mathematical concepts are the place where all the big players tend to allocate their trades, right? So why does market take a rejection in the same range, right? 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे, बट उस पॉइंट ऑफ एक्शन में ही जाके एग्जीक्यूशन क्यों होती है, राइट? देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, बिकॉज ऑफ द मैथ, right? So even your risk management is calculated through a math, right? Is it calculated or no? Right, Vicky?
So that is what you have to just look into it. Look into the perspective of it. Okay. हर एक मैथमेटिकल वैल्यूज आपको दी जाएगी, उसके साथ ट्रेड्स को कैसे अलोकेट करना, रिस्क को कैसे आइडेंटिफाई करना, राइट, व्हाट शुड बी योर स्टॉप लॉस, व्हाट शुड बी योर पिप एंकरेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, सब देख के बने रहेंगे, ठीक है। एवरीथिंग अबाउट मैथ विल बी रिलीज्ड। जो मार्केट में असलियत में चाहिए सब आएगा मार्केट, सॉरी, मार्केट में जो असलियत में जो चाहिए वो सब वीडियोस आएंगे, थोड़ा टाइम दे दो। लास्ट सप्लाई जोन तक रिट्रेसमेंट हुआ है सर, एंड वहीं से रिजेक्शन आ रहा है, जस्ट वेटिंग फॉर वॉल्यूम एज स्टेटेड बाय यू। यस, थैंक यू। ठीक है सर, गुड मॉर्निंग राकेश। ओके, हिट द लाइक बटन गाइस, एंड डोंट वरी, अंडरस्टैंडिंग में तकलीफ हो रही है, आई विल एक्सप्लेन हाउ मच एवर टाइम यू गाइस वांट, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। The only problem is, if you want to grow you have to learn, right? So if you want to learn you have to be patientfully understanding and patientfully executing. No FOMOs, no hurry burry, no running, nothing. लेवल आएगा एग्जीक्यूट होगा, लेवल नहीं आएगा वॉच द मार्केट्स, सिंपल। अगर ट्रेड में हो टारगेट तक होल्ड करो, और कुछ नहीं चाहिए यहाँ पे, सप्लाई एंड डिमांड सीखो। सर, इज देयर एनी फ्रेश एंट्रीज इन गोल्ड? आपको मैसेज भेज दिया सर। अगर 1.618 ब्रेक होता है, then next plan of action will be at your regiment level, which is 1.809 and 2. That is your next target plan, not prior to that. जिनको भी फ्रेश एंट्री चाहिए, यहाँ पे अलोकेशन देखना, इस अलोकेशन के साथ मैथ को ऐड करना, वो आपका नेक्स्ट टारगेट पॉइंट ऑफ एक्शन होगा, ठीक है। फॉर निफ्टी 50, Bank Nifty same, but the only one problem currently in Bank Nifty is sustainability of the market. Okay, अगर sustain होना है तो क्लोजर चाहिए, क्लोज होके नेक्स्ट कैंडल रिजेक्शन के साथ कंटिन्यूटी में आने दो, तब जाके, उससे पहले नहीं, राइट। नंबर्स आर स्टिल द सेम, चेंज मत करना, उसी नंबर ऑफ एक्शन के साथ सिर्फ रेजिमेंट को बढ़ाना। यहाँ पे ये गोल्डन रेशियो 1 है, यहाँ पे चेंज कर दो 2 को, 2 का नंबर डाल दो, रुको यार डाल दो।
Yes, Ricky, I'll explain it to you. Give me a moment. On the break, these are the targets on the break. उससे पहले नहीं. अगर लॉन्ग की तरफ सिनेरियो अलोकेट होती है, कैसे? लेट अ इंड्यूसमेंट बिल्ड विद द इंड्यूसमेंट ओनली, नॉट डायरेक्टली. ओके, इंड्यूसमेंट बिल्ड होने के बाद फर्स्ट रेंज ऑफ जो ब्रेक पॉइंट होगा वही हम कैलकुलेट करेंगे. सर, नहीं नहीं, अंजलि वेट करो. बने रहो मैम, नो प्रॉब्लम. राइट. सो सेम चीज रिकी, व्हाट यू हैव टू नोटिस, आज के दिन में मार्केट ने यहाँ पे क्या किया था, जितना हमारा हाई एंड लो पॉइंट है, स्विंग हाई एंड स्विंग लो, करेक्ट, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट हमें यहाँ पे अलोकेट होते हुए दिखा. दैट इज द रिट्रेसमेंट पॉइंट. राइट, फॉर्मुलेटिव नंबर आके 107 कैसे निकला, हमारा हाई पॉइंट ऑफ द स्विंग आके 22,261 था, एंड हमारा लो पॉइंट आके 22,153.95 था. राइट, जब उसको सब्ट्रैक्ट करोगे वैल्यू आएगी 107.65. राइट, जैसे ही 107.65 वैल्यू आती है, व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू लुक फॉर? रिट्रेसमेंट पॉइंट. हमारा रिट्रेसमेंट पॉइंट इस पॉइंट ऑफ एक्शन में आके 22,189.60 है. बेरिश मूवमेंट है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, जो हमारा फॉर्मुलेटिव नंबर है उस फॉर्मुलेटिव नंबर को हम यहाँ पे डालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे with three ratios. First ratio is golden ratio 1.618. Second one is regiment ratio, which will be from 1.8092 to 2. Then the third, the regiment, which is 3. टारगेट एलोकेशन उसी पॉइंट ऑफ एक्शन से ही होगी. एट द करेंट रेंज हमारा TP1 गोल्डन रेशियो हिट होके सस्टेन हुई है मार्केट. राइट, ऑन द ब्रेक एंड सस्टेनेबिलिटी आर नेक्स्ट टारगेट्स आर दिस. ब्रेक होना है, सस्टेन होना है, तब जाके ट्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन देख सकते हो शॉर्ट के तरफ. वरना यहाँ पे एक इंड्यूसमेंट बिल्ड होने दो. करेंटली व्हाट डू वी नोटिस? इंड्यूसमेंट वन, इंड्यूसमेंट टू, पार्टनर वन एंड पार्टनर टू, क्लोजर अबव इट, देन दिस विल बी योर हाई एंड लो पॉइंट. इस पॉइंट ऑफ एक्शन के साथ ये हमारा रिट्रेसमेंट पॉइंट ऑफ एक्शन होगा, उसी के साथ हमारा गोल्डन रेशियो का फर्स्ट टारगेट. ओके, इंड्यूसमेंट बिल्ड होने के बाद की सिनेरियो ये बता रहा हूं मैं अभी, नॉट प्रायर टू दैट. ओके, सेम चीज इस पॉइंट ऑफ एक्शन में भी फॉलो होगी. देयर इज नो चेंज इन लुकिंग इनटू इट. London sessions will be starting. Okay, understood. Need to practice. Yeah, back test karo, forward test karo. That's when you will get the movement allocations. And build some patience, everyone. इंडियन मार्केट्स में जो ट्रेड करते हैं, कंसोलिडेशन रेंज में अलग फॉर्मूला यूज होती है, वो फॉर्मूला आएगा. एंड वहां पे बाइंग नहीं सेलिंग होती है, कैसे करना होगा वो भी हम समझाएंगे. ओके,
Suppose if we are in short trade, then what should be our SL levels? Break of retracement point or some other levels? जब इंडियन सेशंस में आप ट्रेड कर रहे हो अंकित, एक चीज याद रखना, जितना डिप्लॉय कर रहे हो उसका एक परसेंटेज होता है, उस परसेंटेज को याद रखना. सो इन द सिनेरियो, हाउ डू यू हैव टू लुक इनटू इट? SLP is equal to, just for an example, you have taken a trade entry price, right? Entry price क्या होगी? In the scenario, what is the entry price we have taken at? We have taken at $200 in this scenario, right? What we will be doing into, what is the stop loss percentage you are looking at? To allocate that, what you have to do? 1 minus, अगर 5% है तो 0.05, 10% है 1 minus 0.1, right? Bracket close. You will get a value out of this. With that value into 0.95. Okay. In the current scenario, 5% अगर स्टॉप लॉस है आपका $200 के ऊपर, 190 की आपकी रेंज अलोकेशन होगी, राइट? अगर 10% है तो आपकी रेंज अलोकेशन का एसएल पॉइंट आके एट द फर्स्ट रेंज विल बी ऑफ 180. ओके, सो ये आपको फर्स्ट अलोकेटिंग पॉइंट में जाना है. सो दैट इज द एसएल रेंज. अभी एसएल रखने के बाद आप एग्जीक्यूट हो, ट्रेड प्रॉफिट में चल रहा है, राइट? एट दैट सिनेरियो, जैसे ही आपका रिस्क अक्यूमुलेशन कंप्लीट हो गई, रिस्क अक्यूमुलेशन कंप्लीट होके आप प्रॉफिट में आ गए, उस पॉइंट ऑफ एक्शन पे आपको एमटीएसएल रन करना होगा. एमटीएसएल क्या है? माइंड ट्रेलिंग, राइट? माइंड ट्रेलिंग जब करते चलोगे, सिस्टम पे सीटीसी पे आ जाता है, एंड व्हाट इज द प्रॉफिट दैट यू हैव टू टेक आउट विल बी इन योर माइंड. जस्ट फॉर एन एग्जांपल, इन द सिनेरियो ऑफ गोल्ड, वी लुक फॉर 100 पिप्स, राइट? हमारा एशियन सेशन में एसएल रेंज आके 20 पिप्स का है, राइट? 20 पिप्स हमारा ग्रीन में आ गया. जस्ट फॉर एन एग्जांपल, यू हैव एग्जीक्यूटेड ए ट्रेड ऑफ $10, राइट? यहाँ पे हमें $20 मिल चुकी है, $30 पे चल रहा है. तब हम क्या करेंगे? हमारा एस एल सी टी सी प्लस 5% पे आता है या 1 पे आता है, राइट? सो विद दैट सर्कमस्टांसेस, माइंड में हमारा ट्रेलिंग चल रही होती है, 30 पिप्स चल रहा है तो 15 पिप्स में हमारा एमटीएसएल होता है, राइट? 70 पिप्स चल रहा है तो हमारा माइंड में चल रहा है कितना? 40. सिस्टम पे कहाँ पे है एसएल? 20 पिप्स पे होती है, राइट? No gain, no loss. That is the only formula that you have to follow and sustain in the markets. ठीक है? So always remember, जहां पे भी एंट्री ले रहे हो, कैलकुलेट कर लो. कैलकुलेट करके जो एक्यूरेशन पॉइंट है, उस एक्यूरेशन पॉइंट में एसएल लगाओ. डायरेक्शन में मूव हुआ तो सीटीसी पे लाके माइंड में ट्रेल करके चलो, सिस्टम पे नहीं. सिस्टम पे सीटीसी प्लस वॉट एवर द परसेंटेज यू आर लुकिंग फॉर. देन टारगेट नजदीक आते आते एमटीएसएल प्लस सीटीसी साइमल्टेनियसली ट्रेल होते चलती है. ओके, अभी के लिए आपको बहुत मुश्किल लग रहा होगा, बट मुश्किल है नहीं. ओके अंकित, एनी ट्रेड्स रनिंग?
किधर भी मॉर्निंग सेशन में अभी तक ट्रेड नहीं है, राइट। एग्जीक्यूशन एक ही पॉइंट ऑफ एंगल पे हुआ है, वो है निफ्टी। बीटीसी में अगर ट्रेड चाहिए, कंटिन्यूटी में आने दो। आई हैव टेकन ए शॉर्ट इन गोल्ड सर, ऑन द ब्रेक एंड कंटिन्यूटी, यस अनुपम बने रह सकते हो। टारगेट कितना? TP1 जितना हमारा फर्स्ट डिमांड ऑफ अलोकेशन है उतना, राइट। सो आज के दिन का फर्स्ट डिमांड ऑफ अलोकेशन यही है। This will be the target one on the break. Continuity break होके sustain होती है, then multiply the version, that will be your target two. Okay. Yes sir, got it, thanks. Anyone has any doubts, please do ask. कोई भी डाउट है पूछ सकते हो regards to the market. 145 pips is the first target. Yo, that's right. So तुम्हारा फर्स्ट रेंज ऑफ एक्शन आके 100 पिप्स का होगा। Can you please explain the entry one more time, sir? Is it break of inducement point or we need to wait for a retracement after the inducement? किस इसमें देख रहे हो आप अंकित? Where do you trade? Great. So Nifty and Banknifty, definitely. हाँ आ रहा है, एक सेकेंड आ रहा है। 30 pips running, 60 pips running.
आप दोनों पाईपोटी कर लो। वही तो मैं पूछूं कि आप चुप से कैसे बैठे हो। सही है। राइट, एक सेकेंड ना, और एक एक्सप्लेनेशन कर देता है। ओके, सो नेक्स्ट एक निफ्टी, राइट। सो अंकित, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में what was the one thing that you have to be looking at? लॉन्ग के तरफ देखना है तो इंड्यूसमेंट बिल्ड होने दो। लॉन्ग के तरफ देखना है तो इंड्यूसमेंट बिल्ड होने दो। इंड्यूसमेंट के साथ ब्रेक, कैंडल रिजेक्शन, कंटिन्यूटी, राइट। सो मार्केट सुबह से शॉर्ट में है, तो वो चेंज ऑफ कैरेक्टर जब इंड्यूसमेंट के थ्रू बिल्ड होती है तब जाके हम लॉन्ग की तरफ देखते हैं। तब तक के लिए मार्केट शॉर्ट ही है, राइट। उसके लिए बोला था यहाँ पे, ऑन द ब्रेक, रिजेक्शन, कंटिन्यूटी, market will come down till 28, 21,995, 21,994, 21,974, 21,866. These are the targets. Okay. On the break and continuity. ये हमारा गोल्डन रेशियो है, ये हमारा रेजिमेंट, सॉरी, ये हमारा इंटरमीडिएट रेशियो है, ये हमारा आके कंटिन्यूटी में फॉलो थ्रू का रेजिमेंट रेशियो विच इज एट 3। ओके, 90 pips running. Beautiful, guys. Keep it up. Thanks a lot. No worries. Keep learning, keep growing. 60 pips running. ये हुई ना बात। TSL move to CTC. Great. Hi Anupam, did you take the entry after Sir started the live session? Yes. Post live session only the entry was taken, not prior to that. Good morning, Arundhati ma'am. How are you feeling? You were not feeling well yesterday. 100 pips running in gold. Okay, Arundhati ma'am. Keep it up. सारी दर्द, सारी जुकाम हट गई होगी आपकी। hmm? Good job, anyways. Anyone has any doubts, please do ask.
मली बाबू सर आपके लिए एक मैसेज भेजा था, होप यू हैव एग्जीक्यूटेड द ट्रेड अकॉर्डिंग टू दैट. 8 more minutes on candle closing, guys. Finally, volume pump is coming in gold. GTRG, you can think of taking a trade on retracement now in gold. Good job, Anupam. Thank you. Because I can't allocate, yeah, explain where to enter. So you have done a great job by explaining it. Appreciated. फिर से गोल्डन रेशियो पे आके सस्टेनेबिलिटी दिखा रही है. 'सर आप मुझे शर्मिंदा ना करें सर, जो आपने सिखाया है वही जीटीआर को खेल रहा था मैं. नहीं अच्छा है, बिकॉज ही मिसेस आउट राइट, सो ऐसा इंडिकेशंस उसके लिए आसान होगा, वो बोल रहा हूँ. राइट, इट विल हेल्प हिम आल्सो टू एग्जीक्यूट a trade is what I was saying. So thank you for that. Okay. एवरीवन इन द ट्रेड एमटीएसएल को फॉलो करके चलो. 2862, 843 को इंडियन टाइमिंग में देख रहा हूँ. 843 को लॉन्ग किया था 2862 पे. एग्जिट कहाँ पे किया सर उस ट्रेड को? लॉस में तो कन्वर्ट नहीं किया ना वेंकट? होप यू डिडंट कन्वर्ट द ट्रेड इनटू ए लॉस. नहीं, स्टिल अनुपम ही इज लर्निंग, सो वो कर रहा है. 22 days is one thing, still running. Okay. By next time say please make sure Venkat you don't take the trades in running. One of the biggest mistakes that will take you out. Okay. सिर्फ टेक यू आउट नहीं करेगा, वाइप कर देगा अकाउंट को. जो कंटिन्यूअसली 4 दिन से प्रॉफिट में क्लोज कर रहे हो ना, सो वो पूरा एक दिन में एक ट्रेड में उड़ाने की हिम्मत रख सकती है रनिंग ट्रेड्स. So always remember 3 more minutes guys on the candle closing.
Sir, does time frame plays any role like 1 5 15? सर, अगर आप इंडियन सेशन में ट्रेड कर रहे हो 1 मिनट में ट्रेड करो ही मत, right? 5 minutes and 15 minutes is the plan of action that you have to look for and execute. Candle for spotting the support and resistance before calculation. Okay? एंड अगर आप फोरेक्स में ट्रेड कर रहे हो 15 मिनट के नीचे देखो ही मत. होप दैट इज सिंपल एंड क्लियर फॉर एवरीवन. एंड अंकित, आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं है. जस्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई द पीओआई रेंज टू द मूवमेंट्स. ओके, अगर पीओआई मूवमेंट्स अलोकेट करना सीख गए, राइट, तो दैट इज द ओनली रेंज इंड्यूसमेंट का हाई लो, उस जो रेंज का हाई एंड लो पॉइंट, राइट, दैट इज द ओनली थिंग यू हैव टू लुक फॉर. कंसोलिडेशन रेंज में ट्रेड करो ही मत. Only POI range, inducement building range, that are the range that you have to look for, nothing more. Okay. Yes sir, got it. जितने भी नए लोग हैं जो आज ज्वाइन हुए हैं, if the content is helping you out, if you guys are understanding how does the market moves, if you are getting educated on the markets, do like, share and subscribe. ठीक है. यो. सर बीटीसी लॉन्ग की तरफ, हाँ बैठे रहो, आराम से बैठे रहो यार, प्रॉब्लम ही नहीं. एमटीएसएल फॉलो करके बैठे रहो. ओके हर्षद. I am the only one who has liked the video till now. I am the only one who has liked the video till now. मतलब समझा नहीं. There are 11 people who have liked it. Beautiful guys. Continuity, structure allocate होने दो. Next target completion till 2856. Okay. On the break and continuity. Almost there. कंफ्यूज मत होना कैलकुलेशंस के हिसाब से. अगर चाहिए तो मैं ऊपर इधर रख देता हूँ. So, yeah. Okay. What are you saying, Anupam? वो 90 पिप्स जाके ऊपर आई है.
Okay. Venkat, please make sure going forward you don't execute it in the running candles. Okay? Running candles में execute मत करो going forward. Okay. Rajiv, are you in the trade? Rakesh, are you in the trade? Mahavich, आप कहीं पे trade execute किए हो? किसी एक मैम का मैसेज आया है, नाम नहीं लेना चाहता. She is in live. Okay. First time in the channel, executed the trade through the formula that you shared in the morning. This is the screenshot, and the trade is running with 10 lakh rupees. Still on the trade. Thank you so much for the formula. No worries, man. Keep enjoying, keep learning, and keep growing. You're always one step ahead from your financial freedom. No, not yet. Okay.
Grass looks always greener at the other end, but if the pitch bracket open, trader bracket close is being done by us, grass looks more appealing than congrats, man. सर सुधीर मिसिंग है आज आएगा आएगा
Sorry guys, sorry. Grass looks always greener at the other end, but if the pitch is being done by us, grass looks more appealing then. One more request, sir. Please keep this video public so that we can watch it again for better understanding of the concept. No worries, it will be there. Sir, I am in Geo short from 1 to 6.56. Any feedback on it will help. इंड्यूसमेंट बिल्ड हुई, इंड्यूसमेंट बिल्ड होने के बाद ब्रेक हुई है, ब्रेक होने के बाद कंटिन्यूटी, फॉर्मूला अप्लाई करो, कंटिन्यूटी में आती है वेल एंड गुड, जितना हमारा एसएल पॉइंट है उस रेंज से नीचे है, गुड जॉब, राइट. सो सीटीसी में मूवमेंट अलोकेट करके बने रह सकते हो. करेंटली लंदन सेशन शुरू होने वाली है. There will be some volatility. Once that volatility gets back into normal, आपका मूवमेंट डायरेक्शन एक ही तरफ का होगा. ओके okay? मंडे है, प्रीमियम डीके नहीं होगी, हल्का सा होगी, दैट्स फाइन. गामा एट इज द बेस्ट पॉइंट इन द मनी एंड एट द मनी में. सो इंड्यूसमेंट रेंज, कंटिन्यूटी, ब्रेक, सस्टेन्ड, मूवेबल, यस. एल्स गोल्डन रेशियो पे एग्जिट. Retest on gold is like entering in the possibilities of a retailer thinking, right? 20-30 पिप्स चाहिए, काफी है दिन के लिए, तो एग्जीक्यूट कर सकते हो, नहीं तो इंड्यूसमेंट का वेट करना. ओके, इट्स जस्ट अ न्यू कैंडल फॉर्म.
Okay. Anyone has any doubts, please do ask. ओ प्राकेश, यू अंडरस्टूड रिट्रेसमेंट के साथ अगर बैठे होते तो क्या होता? सॉरी, हमारा एंट्री यहाँ पे हुआ था। After 8 minutes, if you guys get a rejection and then continuity, then yes, definitely you guys can look. That too after 8 minutes, not now. 5 मिनट में जो ट्रेड कर रहे हैं, please come to 15 minutes. We trade in 15 minutes here. अगर inducement build होता है, we are not interested again. Okay. And Mahavich, at the every moment, MTSL is very much important in the trade of execution. Please follow that. Okay. Good morning, Anjali. BTC short में बने रहना जब तक MTSL पॉइंट हिट नहीं होती. Excuse me, guys.
इंडियन सेशंस में जो अभी आया है, फोमो में एंट्री मत लो। यस में तमाम ब्रेक होके सस्टेन, वी कैन लुक फॉर एन एड ऑन। सर हाउ मेनी फॉर्मूलाज आर देयर? 700 प्लस, उसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आके 15। You have revealed two. Yo. Hit the like button, guys. So what time do you start this training? 9 o'clock. आज लेट हो गया, 9:30। रेड कैंडल क्लोजर चाहिए, उसके बाद विक जनरेट करके नीचे आती है तभी ही, उससे पहले नहीं। ओके, होप आई हैव मेड दैट क्लियर। नहीं तो यहाँ पे हल्का सा रिजेक्शन, सॉरी, यहाँ पे हल्का सा इंड्यूसमेंट क्रिएट करके इंड्यूसमेंट के साथ मूवमेंट अलोकेट कर लेगा।
which ब्रेक होता है कंटिन्यूटी के साथ रिजेक्शन के साथ आती है, बने रह सकते हो. Closing after 1 minute, rejection, continuity, right? That is the next. So Nifty made a low of 22,012 and it retraced. Then there is some inducement between 10.25 to 10.55. Then it broke the inducement range and still swinging low or day low is not breached. So in this case, the break of low is also important, or just break of inducement is enough for the further targets. So in this scenario, what you have to notice, right? So your plan of action was here. Okay. This is one. Continuity target one hit, took a retracement, went down at the golden ratio again. Right? What kind of inducement is this? This is a group inducement, right? Not a partner inducement. There are two types of inducements. One, every candle will have a partner. Okay. This is inducement one, right? Red, green, green, red, green, green, red. Like that, you will see a inducement. What is the second range? You will see a group, two green, three green candles, two red, yeah, three red candles. Okay. So in this scenario, what do you notice? Every rejection point has a group. ग्रुप रिजेक्शन के साथ मतलब यहाँ पे पीओआई बिल्ड होने वाला है, इंड्यूसमेंट नहीं पीओआई, राइट? So a person who has sat over here, right here, क्या उनको डायरेक्टली पैसा देगा? नहीं. What will market do? हल्का सा प्रीमियम्स को डीके करेगा, राइट? एट पोस्ट रेंज अलोकेशन एक मूवमेंट अलोकेट करके ना इस तरफ ना इस तरफ डायरेक्शन अलोकेट करेगा, राइट? सो ऑलवेज रिमेंबर, व्हेन द मार्केट इज डे लो तो ब्रेक हो चुकी है, डे लो ब्रेक होके सस्टेन हो चुकी है, नो डाउट. व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग यू हैव टू लुक? ओके, टारगेट हिट हुआ है, क्या मैं यहाँ पे रह सकता हूँ? रह सकते हो विद एन एमटीएसएल. क्या मैं फर्दर एड ऑन कर सकता हूँ? नहीं. फर्दर एड ऑन कब करोगे? इंड्यूसमेंट्स में थ्री टाइप्स ऑफ ब्रेक्स दिखने को मिलते हैं. ब्रेक वन, इंड्यूसमेंट रेंज. इंड्यूसमेंट रेंज किसी भी तरफ का ब्रेक, नीचे या ऊपर का ब्रेक आती है, नीचे या ऊपर की तरफ का ब्रेक आती है. फर्स्ट आपको दिखने को मिलती है रिट्रेसमेंट एंड देन कंटिन्यूटी. दिस इज वन. ओके. सेकेंड, इंड्यूसमेंट बिल्ड होगी, ब्रेक होगी, रिजेक्शन लेगी, रिजेक्शन लेके कंटिन्यूटी में आएगी, सेम रिजेक्शन लेगी कंटिन्यूटी में जाएगी. सेकेंड वे ऑफ ब्रेक. थर्ड वे ऑफ ब्रेक, इंड्यूसमेंट बिल्ड होगी, ब्रेक करेगी, विक जनरेट करके उसके अंदर एक रेंज या कंटिन्यूटी में फेक डायरेक्शन में जिस तरफ ब्रेक हुआ है उसको ऑपोजिट डायरेक्शन आती है, राइट? ये कैसे आइडेंटिफाई करोगे? जैसे ही ब्रेक होने के बाद सिर्फ विक जनरेट होके सस्टेन हो गई है, ओके, तब अगर सेम सिनेरियो नीचे के लिए ब्रेक हुआ है, आपको यहाँ पे क्या करना है? आपको यहाँ पे वेट करनी है. अगर विक क्रिएट हुआ है, एक छोटा सा कैंडल जनरेट हुई है, opposite direction में move, right? So there are only this three types of movement that you could look in a scenario of inducement or the POI. जो भी जनरेट या अलोकेट होती है उसी डायरेक्शन में ट्रेड ऑफ अलोकेशन के साथ बने रहना होता है, राइट? इट्स सिंपल, जस्ट यू हैव टू जस्ट बैक टेस्ट एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड. एक दो बार लाइव में देख लोगे ना, यू विल अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स. नो डाउट विद दैट इंड्यूसमेंट रेंज हमें नीचे के लिए 50 पॉइंट्स मिली है, right? So when the market gives a movement, always remember
जब आप फॉर्मूला के बेसिस के थ्रू रहते हो ट्रेड में, that will be somewhere above 100 points is what the target looks like. उसका नीचे जितना भी है, that could be somewhere between the range of 20 to 30 pips, sorry, 20 to 30 points, max 60 points. Okay, hope you got the point, Ankit. क्या है ये? Okay, sir, got it. Patience is the first major important thing. Second major important thing is fearless. When you trade fearlessly, there are two things that you have to look at. No emotions to be shown, right? Which is प्रॉफिट होने के बाद खुशी नहीं होनी चाहिए, लॉस होने के बाद दुख नहीं होना चाहिए. फर्स्ट. सेकंड वन, फियरलेसली ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करो. कैसे एग्जीक्यूट करना है? ब्लाइंडली नहीं, राइट? देयर इज अ रिस्क मैनेजमेंट फैक्टर दैट यू हैव टू लुक एट. उसी रिस्क मैनेजमेंट फैक्टर के साथ ही ट्रेड में बने रहना है एंड एग्जीक्यूट करना है. ओके, होप दैट इज क्लियर. ओके, जो लोग ट्रेड नहीं लिए हो, एक छोटा सा रिस्क लेके शॉर्ट कर लेना विद द रिजेक्शन. विद द रिजेक्शन. 80 pips running and 30 pips running. यहाँ पे अगर रिट्रेसमेंट देख रहे हो, कितना रिट्रेसमेंट लिया है? जितना हमारा प्रीवियस वाला लिया है या
रैंडमली लिया है रिट्रेसमेंट, प्रीवियस जितना सप्लाई था उतना ही लिया है. दैट्स राइट. एग्जीक्यूशन ओनली व्हेन देयर इज अ रिजेक्शन, नहीं तो डबल द सप्लाई. $500 points in BTC. ब्रेक होके सस्टेन होती है तो इंटरमीडिएट लेवल 2, सॉरी लेवल 1, नॉट 2, माय बैड. ये नहीं बने रह सकते हो. नहीं नहीं अरुंधति मैम, that's not an issue at all, right? Just make sure that you follow the MTSL points. Yes, that's right. 30 pips running at one time. It was 80 pips, but going with the analysis now. Great. So 30 pips running at one time. It was 80 pips. हाँ, same trade में ही हो ना. Now the entry means 30 pips जो है, जो 80 pips गया है, that is running at 50 pips now. So with the analysis, you are in the right point, right? MTSL follow करते हुए बने रहना.
ओके अनुपम। एंड जितने भी नए लोग स्क्रीन पे आए हैं, धन्यवाद एंड वेलकम टू द फैमिली। जो भी डाउट है प्लीज डू आस्क, you will get the explanation for the same. Hit the like button guys. फाइनली ब्रेक हो गया। नहीं हुआ यार, नहीं बैंक निफ्टी नहीं चाहिए, वेट कर लो हर्षद। किस में लिए हो ट्रेड? निफ्टी में, बैंक निफ्टी नहीं लिया। उस दैट टाइम आई वाज ड्राइविंग, सो एनालिसिस सिर्फ एक का कर पाया मैं स्पॉट में, उसके वजह से वो एक ही ट्रेड चल।
Beautiful. Sir, what are you unboxing? 50 pips. So stream lag हो रहा था ना, तो I had ordered TV processor. So this will help to take the load because multiple loads sometimes it tend to not. 32 GB RAM होके भी लोड नहीं ले रहा था मेरा. So had to order this. आज से आपको लैग नहीं दिखेगी. सर क्या क्या ऑर्डर करते रहते हो? आप लोग सीखने के लिए आए हो. सीखते वक्त लैग होगा तो अच्छा लगेगा नहीं ना. कंफ्यूजन्स बिल्ड होगा. कंफ्यूजन्स बिल्ड होगा तो ट्रेड एग्जीक्यूट करने के टाइम इश्यूज आएंगे. सो for the betterment of you guys. Sir, I have a small work. Will rejoin after an hour or so. Take care.
Anyone has any doubts can always ask. Okay. So if the target is still tall and if the market falls to mark it in the same session, we will hold the position for the next session or we close the position and next session we'll calculate fresh position again. See, what is the major thing that you have to be focused here? You have to be next focused here on two things. जैसे ही मूवमेंट अलोकेट होती है, टारगेट कंप्लीट नहीं हुई है, राइट, इन द डायरेक्शन में मार्केट क्लोज हुआ. First, you have to look whether the premiums are fresh or old. अगर expiry date नजदीक आता है तो we exit, we look for a new positions next day. If the time decay is there, then we continue the trade to the next day. Okay. Hope you got that point now.
गैस 2 सेकेंड 2 मिनट के लिए लैग होगी और टीबी प्रोसेसर कनेक्ट हो रहा है. पोस्ट दैट यू गैस कैन री एंटर. रिफ्रेश कर लेना, मतलब 2 मिनट के बाद बता दे जैसे ही होगा. गैस एक बार रिफ्रेश कर लेना. वी आर बैक इन एक्शन. 1300 पॉइंट्स रनिंग. चलने दो. टारगेट आइडेंटिफाई करना.
What is the next step? कहाँ तक होल्ड कर सकते हो? Swing high, swing low, retracement point. Swing high, swing low, retracement point. Right? That is the next pattern that you guys have to draw. Draw out and allocate. Target will be somewhere around 89,400 से लेके 88,200 तक. Okay? Hello. Hello. Follow the MTSL points and work on it. Guys, एक बार रिफ्रेश कर लेना. Super sound. Thank you. प्रोसेसर का कमाल है. माइक तो कल से ही था ना.
MTSLs को फॉलो करो। महाविज, वेयर विल बी योर नेक्स्ट MTSL पॉइंट? यहाँ पे नेक्स्ट MTSL पॉइंट कहाँ पे होनी चाहिए? At cost, right? Cost to cost plus the allocation point of your SL, right? 10%. स्ट्रीम लैग नहीं हो रही है ना अभी? No, sir. Sound is also very clear. Thank you so much. आज से लैग नहीं होगा यार. We have implemented a new TV processor into the system.
MTSL ट्रेल करके चलो BTC में. Next target is 90,500. गोल्ड अभी नहीं, वेट करो सर. निफ्टी में मैंने इंड्यूसमेंट पॉइंट के साथ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स लगाया है. My target is saying of 22,175. Is that right? Inducement break. Target is right. If the market sustains in the spot. Okay. Not prior to that. Thank you, sir. जितने भी लोग नए आए हैं, if you guys have any doubts, please do ask. If you're liking the stream, if you're getting educated through it, share and subscribe. टारगेट कंप्लीट ही नहीं हुआ है तो ऊपर कैसे जाएगा? अगर ऊपर जाना है गोल्ड में तो लेट इट क्रिएट एन इंड्यूसमेंट पॉइंट. With that inducement point only.
Sir, in pairs like GU and EU also mathematical 2.0 works. You said no in the video, but somewhere here you mentioned yes, so asking. Nay, with the concept, no, I said formula should work here. It works. It works in each and every market and each and every charts. Okay. The concept I'm talking about is like previous demand, completion, continuity of the demand. I'm talking about that. If that's the scenario, no is what I had said in the video, right? So followed through just being in the moment, definitely yes. जितने भी लोग ट्रेड में हैं, कंटिन्यूटी में बने रह सकते हो. Sir, what is the next target for gold? Next target for gold currently is standing at 2855. कहाँ पे एंट्री हुआ है राकेश? Where is your entry?
2863.8। अगर ब्रेक होती है, सस्टेनेबिलिटी में मूव आती है, then the target is 2855. Else you could see one more rejection from 2860. Okay. Venkat, hope you're still in the trade. Rules is same, simple and clear. Don't get confused. Beautiful. Just follow this drawing, Marvish. If it breaks and continue, 50% of this. TP1 is hit of yours. Break होके continue होता है. This 50% will be your next target. Then the final point. Okay. Yes, sir. I had it there. Great. How many books have you completed till today? 376. Two times reading. दो बार. Last year का है 376. Are you crazy? Are you crazy? No, I'm not. Yes, sir. I am still. Okay. This year, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 32 books are there. फर्स्ट क्वार्टर का, उसमें से 2 कंप्लीट हुआ है.
30 more to go. सर एलटीडी लेवल्स ऑन कर दो एक बार. ओके. थैंक यू सो मच. निफ्टी का मेरा टारगेट हिट हो गया है. ब्यूटीफुल. Anyone has any doubts? Please do ask. Sir, what books are you talking about, if may I ask? Reading. Self-help books, self-development books. Money proprietorship. There is one book which I am reading. It's called as The Black. Okay. That book has that book has somewhere around 700 pages. Okay. And the cost of that book is 3.6 lakh rupees. And you will get it only in one place.
That's in France. Beautiful book. All the secrets of how to control yourself and your mind is there in it. All the secrets. Can you please explain the logic behind taking Nifty reversal trade and which levels we are considered for calculations? The levels remains the same. Right, at the current scenario, what do you notice? Inducement point range, right? आपका दो लुकआउट्स यहाँ पे देखना होगा जो कि इन द सिनेरियो फर्स्ट इंड्यूसमेंट रेंज, राइट? इंड्यूसमेंट रेंज का ब्रेक। सेकंड, जो हमारा इंड्यूसमेंट रेंज के अंदर का हाई पॉइंट एंड जो इक्वल लो क्रिएट किया वो पॉइंट, दैट आर द टू पॉइंट्स इन द सिनेरियो। अगर कैलकुलेट करके दिखाओ, how will you be looking here? So your subtraction point will be of 22,000 and your second way is here. Okay. So at this scenario, what is the first thing that you will be noticing? 22,043.95 minus 22,005.75, right? Your formulative number is 32. Sorry, your formulative number is 38.2. Okay. What's the next thing that you have to look at? The retracement point. Two things. Retracement point is the same as your point which you have taken over here, 22,044.90, right? So the same retracement point, यहाँ पे प्लेस करोगे, bracket open, formulative number 38.2 into 1.618, right? So that is your golden ratio number one. 22,105.8, 22,105.8, 105.8 में एक रिजेक्शन मिला, इंटरमीडिएट लेवल अलोकेट करो, which is 2. What do you notice? Market 22,125, right? थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे आया. Second way of looking into it, allocate your swing high and low from this range only. Okay. एक second drawings हटा देता हूँ so that it will be clear for you guys. Right? So in this scenario, we will take the swing high and low of this point 1, retracement point number 2, low is still the same. What you will do? Subtract this point of action, which is equivalent to 22,083.10 minus 22,005.75. Formulative number आके क्या आएगा? 77.35 आएगी. रिट्रेसमेंट पॉइंट आके क्या है? 22,043, 22,066.35 plus bracket open 77.35 into 1.618, right? गोल्डन रेशियो का नंबर आके 22,191 आती है. Currently market 22,153 पे है. 191 is somewhere around is point of action. So this is your first target of looking into it. Okay.
So always you have to wait, allocate. इंड्यूसमेंट पॉइंट से हम ट्रेड करने के लिए मना किया है. जो जो ट्रेड कर रहे हैं दैट इज अंडर देयर ओन रिस्क. ओके, अगर यू वांट टू प्ले सेफ, इंड्यूसमेंट एरिया से ब्रेक आने दो. विद दैट ब्रेक यू कैन लुक फॉर एन एग्जीक्यूशन, जो कि इस सिनेरियो में ये होगा. एंड अगर 1.618 ब्रेक होके सस्टेन होती है, कंटिन्यूटी फॉर द नेक्स्ट रेशियो दैट इज इंटरमीडिएट रेशियोस. Hope you guys got the point. Got it. Any doubts? Always remember one thing. If you guys want to change your mindset fast, books पढ़िए. जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा fast आपका way of thinking could change. Okay. 2862.281 is entry price. Anyway, CTC पे आ गया है वेंकट. Going forward, make sure that you don't repeat the same issue. Okay, no running trades. Wait for the moment. With that moment, let the market give an inducement. Through the inducement, you execute the trades. Okay. So, do you read WD Khan related books, or what are your views on that?
मैं एक भी बुक उनके बारे में नहीं पढ़ा हूँ अभी तक। ओके, पढ़ूंगा तो बताऊंगा, because his books will always be in terms of right price actions, trends. Okay. सी मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर आप ट्रेडिंग के बारे में बुक्स में पढ़ रहे हो ना, then you are doing it wrong, guys. Is there a fresh sale in gold? With the rejection continuity, you can look, but not at this stage. Okay? और एक बार रिजेक्शन लेके कंटिन्यूटी में आने दो, तब देख सकते हो. So trading can be learned only in two ways. एक खुद मार्केट में देखो, समझो मार्केट क्या कर रहा है, राइट? उस बेसिस के हिसाब से मूवमेंट बना के बने रह सकते हो. सेकेंड थिंग, you should be a person who is very much into quantum, right? So trend lines, support resistance and all good, but simple math and you seeing into the markets and staying in the markets and reading books are two different perspective scenarios all put together. So always make sure you look into it, you execute it, you allocate the trades. That's when you will understand what it is. ओके, आप बुक पढ़ रहे हो, बुक पढ़ने के बाद आपने नोट्स बनाया, राइट? यू अंडरस्टूड वन सिनेरियो. जस्ट लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, राइट? आपको पता चला प्राइस एक्शन यहाँ पे बना, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चेंज हुई, इस पॉइंट ऑफ एक्शन में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, नीचे आके जैसे ही नेक्स्ट पॉइंट ऑफ एक्शन में यहाँ पे एंट्री लेना होता है. हाउ मेनी टाइम्स डज इट वर्क? बुक के हिसाब से आपने यहाँ पे एंट्री लेते ना, सो व्हाट डू यू नोटिस? रिट्रेसमेंट लिया, रिट्रेसमेंट लेने के बाद यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ एक्शन पे एंट्री लिए, समझो. ओके, आज के दिन में ही एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. यहाँ पे एंट्री है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का, एग्जीक्यूट किया, इमीडिएटली आपको क्या किया मार्केट ने? मार्केट टेंड टू हंट योर एसएल. इट वर्क्स ओनली इन ए साइमल्टेनियस वे. ओके, wanted to sell at 63, missed it again. I am usually lacking confidence in gold and BTC. So sticking with GU and EU, I feel it matches with my I feel it matches with my trading style. What do you suggest? Wanted to sell at 63. Okay. Why you want to sell at 63? Wait for inducement points, no? I usually in gold sticking with GU and EU, I feel it matches with my trading style. What do you suggest? See, हमेशा याद रखना, Mahavich or anyone, two pairs. If you're comfortable trading in that, well and good, right? So BTC and gold are two things which gives you the movement like anything. But if you are having the confidence of staying in the trade where you have the confidence to be in like GU and you can definitely trade, no doubt at all. I will not be having any issues and you should also be not having any issues. उस समय पे एक चीज याद रखना, गोल्ड और बीटीसी भूल जाना. ओके,
If you're just trading GU and DU, make sure you forget gold and BTC. Else, make sure that you gain the confidence, right? Whenever you don't have a movement in gold and BTC, then you look for GU and EU. That are the two options that you can look into and you can work on. Always remember one strategy, two pairs, one backup strategy to trade when your first strategy doesn't work. That's it, nothing else. एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एक बैकअप स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, दो पेयर्स होनी चाहिए. You're all set to create a new milestone for yourself. Always. Okay? Hit the like button, guys. And कोई भी नए लोग जो अभी आए हो, join किए हो, welcome to the stream, welcome to the family. कोई भी डाउट है पूछ सकते हो, नए हो तो बता सकते हो. रिजेक्शन पे एंट्री लिया है तो आपका ट्रेड 10 पिप्स के साथ ग्रीन में है. नहीं लिया है, नो वरीज. Rakesh, your trade is running with 25 pips, right? So post 40 pips, your trailing to the system will be in CTC. But currently, if the market doesn't move in next few candles below 2860, please exit the trade at 30 pips or 40 pips and take home that, because at the current scenario, the market is not tending to move. बिकॉज शाम को 3 बजे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, राइट? वो मीटिंग अगर सस्टेनेबिलिटी वॉल्यूम फोरकास्ट नेक्स्ट 1 आवर में रिलीज हो रहा है, अगर फोरकास्ट नंबर ह्यूज है तो वो मीटिंग के टाइम पे मूव होगा, वरना पोस्ट 2 आवर्स द मार्केट विल स्टार्ट दैट मूवमेंट. ओके, दिस इज फॉर एवरीवन. Yes, I'm working on the later. Thanks. No worries. Confidence will come, right? But only one thing you guys have to keep in mind is one strategy, one backup strategy, two pairs. अगर सेलेक्ट कर लिए दो पेयर, तो till the time you don't master that two pairs, you're not moving to any other charts. As simple as that.
सर आप भी फोरकास्ट दे सकते हो क्या? भाई फोरकास्ट का फॉर्मूला ही दे दिया है यार, वीकली में चल के डाल लो, आपको पता चल जाएगा फोरकास्ट क्या है करके। न्यूज़ देखने की जरूरत नहीं है फोरकास्ट आइडेंटिफाई करने के लिए सब। यू हैव द फॉर्मूला नाउ, यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। Excuse me. You can remove the levels like no one else does. ट्रेडिंग का ट्रेडिंग का ब्रह्मास्त्र है। Yes, it is. The next formula, what you guys will be seeing, will be mind blown, and you will enjoy the trading through that as well. That is a combination of Fibonacci numbers through the mathematical concept. वहां पे बहुत पेशेंस की जरूरत है उस चीज में। अगर पेशेंस डेवलप करना है, यूज दैट कॉन्सेप्ट, डेफिनेटली यू विल गेन द पेशेंस। हार्डली आपको एक या दो ट्रेड मिलेंगे वहां पे, उससे ज्यादा नहीं। The next concept which will be coming up, and you guys will love it. कोई तो नहीं है सर, पेशेंस ही तो नहीं है। आएगा आएगा, क्यों नहीं आएगा, सब आएगा। वेट तो करो, सब आएगा। एंड अंकित, अगर आप स्ट्रीम पे हो, you notice what did the market do, right? No doubt, the movement is of just 50 points. Even then, premium में 30 points की movement आती है. That's not the point here. Is the math working or not? Is the point here. Yes. 'Premiums' के ऊपर के लिए भी we are working on it, but current accuracy of that is at 10%. तो 90% आने के लिए बहुत बहुत दिन चाहिए। So जैसे ही 90 प्लस आता है, we'll share that as well. 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे भूल जाओ, राइट? Some hedge funds tweak the numbers, right? How do they tweak the numbers? ये फॉर्मूला यूज करता है, right? Instead of 1.618, right, they will put 1.617, right? Instead of 1.617, they will put 1.619. So हल्का सा tweaking चलती है. So max to max is 15, 20, 10 to 20 पॉइंट्स का रेंज पकड़ के चल लो। अगर डायरेक्शन मूवमेंट से, तो उतना ही वेरिएशन आपको दिखने को मिलेगी, उससे ज्यादा नहीं।
Definitely working, sir. I have been applying and checking the calculations for different index. Great. Keep it up. And it's just not one formula, right? So, like that, there are multiple formulas. For each and everything, there is a formula. अगर फॉर्मूला के ऊपर शॉर्ट्स चाहिए तो बता देना. So every day, how to calculate RRR, how to find your strengthen index and volume changes. उसके ऊपर formulas बना बना के शेयर करता है. Sir, 1 or 2 trades per day or week. जो नया कॉन्सेप्ट में आने वाला है उसके बारे में बात कर रहे हो तो इट इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल थिंग्स. दिन में एक ट्रेड मिलता है, राइट? स्विंग ट्रेडिंग लेके चल रहे हो, राइट? आपको हर एक पॉइंट में ट्रेड मिलता है, बट होल्ड करना है. दैट इज यूज्ड फॉर बेसिकली कंपाउंडिंग. कंपाउंडिंग फैक्टर्स अलोकेशन के लिए वो यूज करते हैं. सर यहाँ पे तो हैंगिंग मैन बना है. कुछ भी बनने दो यार, फॉर्मूला फॉलो करो. ओके. Sir, do you know about rice key movements? Yes, I know about rice key movements. One of the beautiful things which was invented in 1962 and it worked in the markets till 1997. Invented by Shironaki, a Japanese trader. Lovely moments, right? Every trade, if you allocate, अभी नहीं चलती हो, but उस समय पे चलती थी. Every trade allocation which was done by him was somewhere into a movement of 45% trade allocations. 45% of the targets वो पकड़ के चलता था एक एक movement में. That beautiful that strategy was. Rice key movements. Only 12 traders knew it in the entire world. After his death, his students released it. Lovely. The story is also good. Yes, sir. I had been to Japan. वहाँ पे वो book मिला था तो लेके आया. Traveling is one of the beautiful things here. जिस पॉइंट ऑफ एक्शन में आप कुछ ढूंढते रहते हो या ना ढूंढते रहते हो, जिस चीज के लिए आपको चाहिए वो तो मिल ही जाती है, राइट? जैसे द ब्लैक, राइट, द राइस की मूवमेंट्स, वो सब आपको अमेजोन पे या प्राइम पे नहीं मिलेंगे, फ्लिपकार्ट पे. यू हैव टू ट्रैवल फॉर दैट. दैट्स नाइस. सर, read your book. Amazing. Thank you for the knowledge that you have shared. Keep learning, keep growing. हाँ सर.
Why maths? Why not indicators? No indicators was identified by an Indian, but math was. बिना जीरो का कुछ काम नहीं होता है. Zero invention was done by Aryabhatta, and I am a math lover. So definitely, whatever I look into the perspective of calculations, like just not in markets, even in life, math work. Math works. We'll close the stream in 8 minutes. उससे पहले किसी को भी doubt है, please पूछ लीजिए. Do hit the like button if you're new to the stream, if you're learning, if the contents are helping you out to grow. Like, share, and subscribe. आज लैग नहीं हुआ ना? What's your dream? Gold at CTC. Yes, no lag today. Sir, what are the live stream timings? Daily or on specific days? Ankit, we do it daily. Morning 9 o'clock से लेके 4 hours. Evening 5 o'clock से लेके 3.5 hours से लेके 4 hours. Gold at CTC. इंड्यूसमेंट रेंज जब तक बिल्ड नहीं करती है तब हम दूसरा डायरेक्शंस देखने वाले नहीं हैं. ठीक है. Okay, sir. Thanks. How many screens do you use? किसके लिए? I use the laptop to write the books. To stream, I use four screen setup. For trading, I use 12 screen setup.
एंड वन मोर थिंग, यू गाइस डोंट नीड मल्टीपल स्क्रीन्स. एक चार्ट देखने के लिए काफी है, मोबाइल से एग्जीक्यूशन करने के लिए काफी है, नथिंग एल्स. ओके. Sir, how rice key trading spelled? RICE space W I K space trading. No lag at all. Thank you. टिप्स देना शुरू कर दो सर. अगेंस्ट माई एथिक्स. सॉरी, नहीं मिलेगा. सीखो, एग्जीक्यूट करो. Why no one noticed this before? Why everyone followed trend lines, EMAs, fib retracements, support resistance, ICT, SMC? किसी ने उसके दिमाग में डाला है ना, ICT फॉलो करो ऐसे होगा, SMC फॉलो करो ऐसे होगा. Good. People are doing it. Nice. They learned from someone, they are executing it. You should always keep learning. You should never stop learning. The day you stop learning, समझ लेना, that's the day you stop earning. How much does a setup cost? एक लैपटॉप 30,000 में मिल जाएगा. एक फोन जो आप ऑलरेडी यूज कर रहे हो. अगर 30,000 भी नहीं है, सेकेंड हैंड में 10,000 में मिल जाएगा. गुड आफ्टरनून अनुपम. 2 मिनट में स्ट्रीम क्लोज कर रहे हैं, आप अभी आए. नो वरीज, ट्रेड में हो ना अभी भी. माई ट्रेड इज स्टिल गोइंग ऑन. ग्रेट, कीप इट अप. सबका चल रहा है. नाइस. ओके. सो अगर 30,000 भी नहीं है, 15,000 काफी है लैपटॉप के लिए. फोन आप ऑलरेडी यूज कर रहे हो. द बेस्ट सेटअप टू ट्रेड. सब लोग कंपाउंडिंग के ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए. राइट. You have got the formula to execute the trades. The next thing you guys have to be looking at while executing is compounding. Start compounding in the trades. People who are here from last 7 days and who are watching it, please do
compound and start looking into compounding trades. Okay. Hi, good afternoon. How are you? Hope doing great. I saw your mathematical edge video. Had a query how to mark the swing high and lows. Yes, that's right. I usually trade XAUUSD. We also usually trade that only. The only thing you have to look at is work on the mathematical edge 1.0, not 2.0, right? With that 2.0, utilize the supply and demand. At the current stage, we are closing the stream, but for you, you can just rewind and check how it has been used and how to identify the swing high and swing lows. We will explain it to you in the evening session, which starts at 5. Okay. I'll give you a small glimpse how to use it, right? Identify the previous targets, which is already done. In the scenario of this, right? This was my previous target closure. With this, what do? I allocate the formula. I know the high point. This is the high point. I have got a reversal point, right? At this stage, आपको क्या करना है? Reversal stage मिलने के बाद इस point of action से आप दोनों फॉर्मूला यूज कर सकते हो, नहीं तो मैथमेटिकल एज का फर्स्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो. ओके. एंड यहाँ पे आपको रेशियो विल बी लुक्ड इनटू टू रेजिमेंट्स. वन इज 1.618 एंड टू रेजिमेंट्स फॉर द टारगेट्स. एंड फर्स्ट फॉर्मूला के हिसाब से यू विल यूटिलाइज 0.375, 0.5 and 0.618. हाउ डू यू आइडेंटिफाई इट? आपको आइडेंटिफाई करने के लिए इंड्यूसमेंट पॉइंट्स आइडेंटिफाई करना होगा. इन द सिनेरियो, इंड्यूसमेंट पॉइंट्स हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंड्यूसमेंट्स. वन, you will have a partner with every candle. Another one, you will have the groups. Okay. Groups is nothing but in the partner you will find green candle, red candle, red candle, green candle, green candle, red candle patterns. In the groups you will see 3 green, 3 red, या 2 green, 2 red in the inducement range, right? जैसे ही वो inducement range build होता है, उसी point of action के साथ trade off allocation हम देखते हैं, right? With the same scenario, अगर आपको live trades देखना है from 18th Feb से लेके आज तक, you can look at our gold trades for the better understanding. In detailed explanations I could definitely give you, but in the evening sessions. Okay. Hope that doesn't make you feel bad, Sarthak. ठीक है. It's a concept which you have to go with two variances. One variance is with allocating the formula allocate करने के बाद supply and demand identify करके trade में बने रहे. Got it, sir. Thank you. No, not at all. Sure. So किसी को भी कोई डाउट है, प्लीज कमेंट में डाल दीजिए. इवनिंग सेशंस में हम उसको कवर अप कर लेंगे. तब तक के लिए एवरीवन टेक केयर, डोंट लूज द कैपिटल. मिलते हैं इवनिंग सेशन में. तब तक के लिए नितेश साइनिंग ऑफ. टेक केयर, बाय बाय.